Dear students and fellow listeners, very good evening to all of you. Today we will explore the facts about the entitled theme, Concept of Learning. Dear students, as we know that child has to face or come across to the two periods. One period is known as prenatal period. Prenatal period is that period in which the child remains 9 months in the womb of mother. यानी कि ये वो पीरियड है जिसमें 9 महीने बच्चा जो है वो माँ की कोख में पलता है. After 9 months back, the mother gives birth to the baby, and the baby, I mean to say you newborn baby, comes contact with the new physical and social environment. The period is known as postnatal period. यानी कि postnatal period after birth start होता है. When we will look through the prism of psychology of learning बच्चे की postnatal period से start होती है. Because learning means modification of the behavior with the result of experiences. और birth के बाद हर कोई organism, human child as well, different experiences gain करता है जब वो directly physical environment या social environment के contact में आता है. And environment plays vital role and important role in order to modify the behavior of the organism. It may be any animal, it may be also the human child. The child from the postnatal period learns number of things. For example, child learns how to crawl, how to stand, how to walk, eat, dress, and so many other life skills. Dear students, the great behaviorist, whom we also called father of behaviorism, I mean to say you J.B. Watson. J.B. Watson beautifully remarked, "Give me 1 dozen of healthy children, I will make it whatever you want." Child becomes doctor, child becomes engineer, child becomes thief, child becomes vagabond, child becomes looter, child learns any other skill. यानी कि इन्वायरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रोल एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म पे होता है. यानी कि लर्निंग का आगाज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से जब एक इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है. डियर स्टूडेंट्स, according to great philosopher, namely John Locke. John Locke has given own dictum. जो उसका फेमस डिक्टम है, that is child's mind is tabula rasa. Where the environment pen downs or writes the message. यानी कि जो बच्चे का दिमाग है वो एक कोरे कागज की तरह है, क्लीन चिट के मानंद है. और आहिस्ता आहिस्ता जब यही माइंड और ब्रेन सोशल इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइंड स्टार्ट हो जाती है. इन्वायरमेंट जो है उसके माइंड पे एक इंप्रेशन डालता है. द चाइल्ड लर्न्स सो मेनी थिंग्स, लाइक चाइल्ड में
लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। चाइल्ड लर्नस स्किल्स, चाइल्ड लर्नस एटीट्यूड, बिलीफ्स एंड अदर लाइफ केयर activities. Now, dear students, we will focus on certain definitions in order to understand the concept of learning, what basically learning is. Number one, according to Stephen, learning is a relatively permanent change in behavior that results from experience. As dear students, we have already mentioned, learning is the modification of behavior with the result of experiences. And there is the relative change, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना कम्प्लेक्स टास्क है, और जो साइकोलॉजी है ये एक पॉजिटिव साइंस है। जो भी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होती है वो रिलेटिव होती है, नॉट एब्सोल्यूट परमानेंट। दैट इज व्हाई लर्निंग सिंपली मीन्स रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल with the result of experiences. For example, if we will take example of burning candle, अगर हम एक कैंडल को जलाएंगे और वो जलता हुआ कैंडल बच्चे के सामने रखेंगे, चाइल्ड विल क्रॉल टुवर्ड्स द बर्निंग कैंडल और वो उसके फ्लेम को टच करने की कोशिश करेगा। जो ही वो बर्निंग कैंडल के फ्लेम को टच करेगा, डेफिनेटली विल गेट द बर्न एंड ऑल्सो द पेन। और नेक्स्ट टाइम हम अगर किसी और जलते हुए चीज को बच्चे के सामने रखेंगे या फिर से कैंडल को उसके सामने रखेंगे, चाइल्ड विल डिस्क्राइब द फियर इंस्टेड टू टच द बर्निंग फ्लेम, क्योंकि उसमें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आ चुकी होगी with the result of previous experiences. That is why when we will look through the prism of or viewpoint of Stephen, that learning simply means modification of behavior with the result of experiences. Number second, according to Henery Smith, learning is the acquisition of new behavior or strengthening or weakening of old behavior as a result of experiences. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, the key word of learning is modification of behavior with the result of experiences. यानी कि हर कोई learning जो है it revolves around the experiences, और एक इंडिविजुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस भी हासिल करता है और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस भी हासिल करता है। इट मीन्स लर्नर डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी सीखता है और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है। यानी कि व्हेन वी विल डिस्कस द व्यू पॉइंट ऑफ हेनरी स्मिथ, इट इज एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर ब्रॉडरली टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। एक बिहेवियर को हम कहते हैं डिजायरेबल बिहेवियर, दूसरे बिहेवियर को हम कहते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल बिहेवियर इज दैट बिहेवियर विच इज एज पर द रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, आई मीन टू से यू कोड ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के हिसाब से है। एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इज दैट बिहेवियर विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स और लॉ ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बच्चे की मिसाल लेंगे, बच्चे में कौन सा अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, लाइक एब्यूजिंग, लाइंग, स्टीलिंग और अदर अनडिजायरेबल बिहेवियर्स, बिकॉज चाइल्ड बाय बर्थ इज एनिमल, but when the same child comes contact with the social environment, especially strongest social agent mother होती है, mother is being considered the one of the strongest social agent,
बिकॉज बचपने में सोशलाइजेशन का रोल कौन अदा करती है? एक माँ ही अदा करती है, जो हेल्प करती है एक चाइल्ड को अनडिजायरेबल बिहेवियर को एलिमिनेट करने में एंड प्रमोट द डिजायरेबल बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे में अनडिजायरेबल बिहेवियर एब्यूजिंग है, जब भी वो एब्यूज करता है, जब भी वो लाई करता है, किस तरीके से हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को ख़त्म करेंगे और हम डिजायरेबल बिहेवियर को प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा फितरत से गाली देता है तो मदर उसे डांटती है या कभी कभार पनिशमेंट भी देती है, और नेक्स्ट टाइम बच्चा जो है वो गाली नहीं देता है। इट मीन्स दैट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेकन प्लेस विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। या कभी कभार बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे का खिलौना चोरी करता है या चुराता है, तो घर में उसके पेरेंट्स उसे डांट करते हैं कि चोरी करना ठीक बात नहीं है, आपको किसी का खिलौना नहीं चुराना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जो वही बच्चा है वो स्टीलिंग से गुरेज करता है। सो वी कैन हियर से दैट कि अनडिजायरेबल बिहेवियर हैज चेंज्ड इनटू द डिजायरेबल बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम इट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इथिक्स, किस तरीके से हम एक बड़े इंडिविजुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बिहेवियर्स डेवलप करेंगे बाय मीन्स ऑफ रिवार्ड, बाय मीन्स ऑफ फियर, बाय मीन्स ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयर काम करता है, अगर कभी कभार भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक करता है, वायलेट करता है, एंड द एम्प्लॉयर हैज़ टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक उसे टर्मिनेट किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है या कोई और पनिशमेंट दी जाती है, और इसकी वजह से जो बाकी एम्प्लॉयर्स है उन्हें इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस एक हासिल हो जाती है। फलानी टीचर को टर्मिनेट किया गया, फलानी डॉक्टर को टर्मिनेट किया गया, फलानी ऑफिसर को टर्मिनेट किया गया, तो अगर मैंने भी ऐसा किया, आई माई सेल्फ हैज़ टू बियर द सेम कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो अपने जो कैरियर में ट्रांसपेरेंट रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं, ऑनेस्टी और सिंसियरली और बाय एंड लार्ज इथिकल कोड फॉलो करते हैं। दैट इज वाई हियर वंस अगेन वी डिफाइन लर्निंग सिंपली मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। Number third, crow and crow. According to crow and crow, learning is the acquisition of habits, knowledge and attitudes. Dear students, as we have already discussed कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल में एटीट्यूड फॉर्मेशन डेवलप होती है विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो नॉलेजेबल बनता है व्हेन कम्स कंटैक्ट विद द सोसाइटी, किस तरीके से एक इंडिविजुअल में कि हैबिट्स, गुड हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं व्हेन कम्स कंटैक्ट विद द सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि बच्चे में हैबिट फॉर्मेशन डेवलप हो जाती है जब वो घर से, स्कूल से हैबिट सीखता है, हाउ टू टॉक, हाउ टू आई मीन टू से यू क्लॉथ द क्लॉथ्स, हाउ टू कॉम्ब द हेयर, हाउ टू बाथ, हाउ टू ब्रश द टीथ या अदर डिजायरेबल हैबिट्स वो सीखता है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि एटीट्यूड फॉर्मेशन का सवाल है कि हाउ डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल सिट बॉर्न पर्सन, जिसे हम मगरूर भी कहते हैं, जिद्दी भी कहते हैं, या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विद द पैसेज ऑफ टाइम आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बिकम्स विक्टिम ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन के साथ, मगरूर पर्सन के साथ जो घुमंडी होता है, कोई पसंद चलना नहीं करता है। ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सिट बॉर्न पर्सन, मेरे साथ कोई फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना चाहता है, कोई मेरे साथ चलता नहीं है, नोबडी इज कोऑपरेटिंग विद मी।
तो वो ये रियलाइज करता है इसके लिए वही जिम्मेदार नहीं बल्कि मैं भी हूं, क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड है ये घमंडी है, मेरा जो एटीट्यूड है ये सेल्फ सेंटर्ड है. बाय गेनिंग दीज एक्सपीरियंसेस द stubborn person, or I mean to say you self-centered person, tries to bring the behavioral modification on the basis of or with the result of previous experiences. So this is known as learning. Dear students, before completing or concluding the topic concept of learning, once again let me to define what learning means. Learning is by and large nothing. It is the modification of the behavior with the result of experiences. और वो experiences हमें directly भी हासिल होती है और indirectly भी हासिल होती है. Thank you and grow strong.